श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायव्य संहितायाम् अथ चतुर्विंशोऽध्याय। ऋषि उचु अनन्तदारनगतो देव्या सहसानुचरो हरः क यात कुत्र वावास किं कृत्वा विररामः। वायुर्वाच महीधरवर श्रीमान् मन्दरक्षेत्रकन्दर दयितो देवदेवस्य निवासस्तपसोऽभवत्। तपो महत्कृतं तेन वोढुस्व शिरसा शिवो चिरेण लब्धं तत्पादपङ्कजस्पर्शजं सुखं तस्य शैलस्य सौन्दर्यं सहस्रवदनैरपि न शक्य विस्तराद्वक्तुम्। वर्षकोटिशतैरपि शक्यमप्यस्य सौन्दर्य न वर्णयितुमुत्सहे पर्वातन्तरसौन्दर्यसाधारणविधारणात्। इदं तु शक्यते वक्तुम् अस्मिन् पर्वतसुन्दरे हृद्यचाकयापि सौन्दर्यमीश्वरावासयोग्यता। अत एव हि देवेन देवया प्रीचिकीर्षया अतीव रमणीयोऽयं गिरिरन्तपुरीकृता। मेखला भूमयस्तस्य विमलोपलपादपा शिव्योर्नित्यस्सान्निध्यान्नयकुर्वन्त्यखिलं जगत्। पितृभ्यां जगतो नित्यं स्नानपानोपयोगता। अवाप्तपुण्यसंस्कारा प्रसरतिस्ततः लघुशीतलसंस्पर्शरच्छाचैर्निर्झराम्बुभिः अधिराजेन चाद्रीनां द्विरेशोऽभिषिच्यते निशासु शिखरप्रान्तवर्तना शिलोचया चन्द्रेण जलास्म्राज्य अच्छत्रेणेव विराजते। स शैलंशचलीभूतेर्बाले क्षामरयोषितां सर्वपर्वतसामार्जय चामरैर्विव्यज्यते। प्रातर्भ्युदिते भानो भूधरो रथभूषिता दर्पणे देहसौभाग्यं दृष्टुकाम इव स्थिता। कूजदेहं वार्तोद्धूतलताभुजे विमुक्तपुष्पैस्ततं व्यालम्बिर्मृदुपल्लवे लताप्रदान जटिलैस्तरुभिस्तापसैरिव जयाशिषा सहा भयर्च्य निषेवयत् इवाद्रिराट् अधोमुखे रुदर्मुखे शृङ्गस्त्रियडुमुखैस्तथा निवपाताले भूपृष्ठादुत्पतन्निव परीत सर्वतो दिक्षु भ्रमन्निव विहायसि पश्यन्निव जगत्सर्वं नृत्यन्निव निरन्तरं। गुहामुखे प्रतिदिनं व्यातास्तो विपुलोदरे अजीर्णलावण्यतया जम्भमान इवाचला ग्रसन्निव जगत्सर्वं पिबन्निव पयोनिधिं वम्निव तमोन्तस्थं माध्यन्निव खं उदे निवासभूमयस्तास्ता दर्पणप्रतिभोदरा तिरस्कृतात्तपा स्निग्धा श्रमच्छायामहीरुहा सरित्तरस्तडागा दिसम्पर्क शिशिरानिला तत्र तत्र निशानाभ्यां शिवाभयं सफलीकृता। तमिं सर्वतं श्रेष्ठं समृता साम्रस्त्रियम्बका रैभयाश्रम समीपस्थ शान्तन्तर्ध्यानगतो ययो तत्रोध्यानमनुप्राप्य देवया सहमेश्वर रराम रमणीयासु दिव्यान्तपुरभूमिषु तथागतेषु कालेषु प्रवृद्धासु प्रजासु च दैत्यशुम्भनिशाचरैर्युतैः
शुम्भाख्यो भर्वात्तरो सम्बभूवतु ताभयां तपोबलाद्यन् ब्राह्मणा परमेष्ठिना अवध्ययत्वं जगत्सिंहन् पुरुषैरखिलैरपि अयो निजातु या कन्या ह्याम्बिकाशं समुद्रवा अजातपुष्पञ्चरतिरातिर्विलङ्घच्च पराक्रमा तया तु नौवदासङ्के तस्यां कामाभिभूतयो इति चाभिर्यर्थो ब्रह्मा ताभयां तथा स्थितवती तथा प्रभृति शक्रादीन् विज्येत सुमरे सुरान् निसवाध्याय वष्टकारं जगच्चक्रतुर्क्रमात् तयोर्वध्याय देवेशं ब्रह्माभ्यर्थितवान् पुनः विनिध्यापि रहस्यं वा क्रोधार्यत्वा यथा कथा तद्वर्णकोशजां शक्तिं कामा कन्या कां निशुम्भशुम्भयोर्हन्त्री सुरेभयो दातुमर्हसि एवं भर्या स्थितो ध्राता भगवान् नीललोहिता कालित्याह रहस्यं वा निन्दयन्निव सस्मिता तथा क्रुद्रा तदा देवी सुवर्णावर्णकारणात् समयन्ती चाह भर्तारं समाधेयया गिरा देव्युवाच ईदृशे मम वर्णे अस्मिन् रतिर्भवतो सच्चेत एतावन्तं चिरं कालं कथमेषा नियम्यते तया वर्तमानापि कथं च रम्यसे मया न हा शक्यं जगत्स्मन्ये क्षरस्य जगत्प्रभो स्वात्मरारमस्य भवतो रतिर्न सुखसाधनम् इति हेतो समरो यस्मात् प्रसम्भं भस्मसात्कृता याचनाभिरता भर्तुरपि सर्वाङ्गसुन्दरी सा वृद्धैव हि जायेत् सर्वरेऽपि गुणान्तरे भतुर्भोगैकशेषो हि सर्गवेश योषितां तथा सत्यन्यथा भूता नारी कुत्रोपयुज्यते तस्मादर्णममिं त्यक्त्वा तव्या रहसि निनन्दितं वर्णान्तरं भजेष्यावाना भविष्यामि वा स्वयम् इत्युक्त्वो तथाय शयाना देवी साचष्ट गद्गदं ययाचेनं मतिं भर्तुस्तपसे कृतनिक्षया तथा प्रणयभङ्गेन भीतो भूत्पति स्वयं पादयो प्रणम्य नैव भवानीं प्रत्यभाषत ईश्वरुवाच अजान्ती च क्रीडोक्तिं प्रिये किं कुपितासि मे रति कुतो वा जायेत त्वक्षेदर्रतिर्मम माता त्वमस्य जगता पिताहं मद्धीपस्तथा कथं तदुपपद्येत त्वतो नाभिर् तिर्मम आवयोरभिकामोऽपि किमसौ कामकारिता यथा कामसमुत्पत्ते प्रागेव जगदुद्रव पृथग्जज्ञानां रत्यये कामात्मा कल्पितो मया तथा कथमुपालब्ध दाहादहं त्वया मा वै दश सामान्यं मन्यमानो मनोभवा मनाकपरिभवं कुर्वन् मया वै भस्मसात्कृता विहारोऽप्यावयोरस्य जगत्सत्रान् कारणात् तथा तदर्थं त्वयद्य क्रीडोक्तिं कृतवानहं स चायं चिरादर्थस्तवेवाविष्करिष्यते क्रोधस्य जनकं वाक्यं हृदि कृतवेदं ब्रवीत् देव्युवाच श्रुतपूर्वं हि भगवस्तव
चाटुवचो मया येनैव मतिधीरा अहमपि प्रागभिवञ्चिता प्राणनानय प्रिया भर्तुर्नारीया न परित्यजेत् कुलाङ्गना शुभा सद्धि कुतिस्तैव हि गम्यते भूयसी च तवाप्रीतिर्गौरमीति मे वपु क्रीडोक्तिरपि काली ती घटते कथमन्यता सिद्धिर्विगिर्हितं तस्मात्तव काषण्यमसमत्तमा अनुत्सृज्य तपो योगात् स्थातु मे वेह नोत सहे शिववाच ये देवं विदधापस्ते तपसा किं प्रयोजनं ममेच्छया स्वेच्छया वा वर्णान्तर्वती भव देव्युवाच नेच्छामि भवतो वर्णं स्वयं वा कतुर्मन्यथा ब्राह्मणा तपसाराध्य क्षिपं गौरी भवामयम् ईश्वरवाच मत्प्रसादात् पुरा ब्रह्मा त्वं प्राप्तवान् पुरा तमाहूय महादेवी तपसां करिष्यसि देव्युवाच त्वतो लब्धपदा एव सर्वे ब्रह्मादयसुरा तथा पर्याराधय तपसा ब्राह्मणा त्वनियोगता पुरा किल सती नाम्ना दक्षस्य दुहिता भवम् जगतां पतिमेवं त्वां पतिं प्राप्तवती तथा एवं ध्यापि तपसा तोष युत्वा द्विजं विधिं गौरी भवितुमिच्छामि को दोषा कथ्यतामिह एवमुक्तो महादेव्या वामदेव समयनिवनातं निर्बन्धयामास देवकार्यचिकीर्षया इति श्रीशिवमहापुराणे सप्तम्यां वायव्यः संहितायां पूर्वभागे शिवमन्दरगिरिनिवास क्रीडोक्तिवर्णनं नाम चतुर्दशोऽध्यायः।